Good morning, everyone. Good morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. There's a slight change in the schedule for today. Uh, as I have not received my laptop yet, the SM slide pack is not there with me. So, as adjustment, we'll be continuing with the project management slides today, the sessions with respect to the project management syllabus. I would request Prasad sir to please share the slide pack. Yes. Thank you, sir. So, yes, next slide. So this is the syllabus and first chapter we are actually right now dealing with. Next slide. Whatever is highlighted in green color, we are dealing with those. The light green color topics we have already covered. The dark green color topics we are going to conduct it today. Okay, followed by the dark highlighted topics. And probably in the next 2 weeks we'll complete chapter 2. Sorry, chapter 1. Next slide, please. Please bear with my voice because since yesterday I'm facing some throat problem. So today we'll try to touch base the project life cycle as an important part of this today's session. Okay, and as well touch base project management processes. Yes. Next slide. So friends, in the earlier session we have seen various aspects of projects, project management, stakeholders, who is a project manager, who is a program manager, how a project manager is different from project manager, who manages whom. We have seen it, and we have also seen how the projects are managed from the tactical and strategic perspective as well. So we talked about these things in the earlier session. So moving ahead, please remember, when we talk about any project, may it be a IT project or any other non-IT project like manufacturing, pharmaceutical or civil or any such project, they cannot run in isolation. Basically, project must operate in a broad organizational environment. Okay, so when we talk about the stakeholders also, we come to know that the stakeholders are any affected party that is involved in the project in direct or indirect way. Okay, somehow the other way the stakeholders are related, are associated with the project, and these stakeholders, either they are within the team member or they are outside the team, sorry, within the project environment or outside the project environment. Outside means beyond the project organization where the project is being developed. So the within organization stakeholders could be the sponsors, the team members, whereas outside the project environment stakeholders would be government, other end users, customers, etc., or as well as vendors. So this environment in which this project run, they have certain interdependence and interrelation, interaction between them. They cannot work in isolation, that is remotely वो काम नहीं कर सकते उनका give and take within the environment and outside the environment होना जरूरी है. Project management needs to use system thinking. ये क्या है सिस्टम थिंकिंग? उसको पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से होलिस्टिक व्यू से विचार करना होगा प्रोजेक्ट को आगे लेने जाने के लिए. टेकिंग अ होलिस्टिक व्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ इट रिलेट्स टू द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैंने बताया, प्रोजेक्ट, अगर हमको प्रोजेक्ट का एक ये एस्पेक्ट समझना है तो बिजनेस पिरामिड को फिर से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, जिसमें when you as a smallest entity enter that organization as a trainee,
and you get a project, may it be a IT or a non-IT project, you get a small thread of work. Okay, like some assignment आपको मिलेगी. Considering an IT program, one program is a thread of a whole project. Okay, so आपको कोई प्रोग्राम लिखने के लिए बोला जाएगा, कंसिडरिंग एग्जांपल ऑफ आईटी प्रोजेक्ट, या अगर आप कोई सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए दिए जाएंगे. प्रोबेबली यू मे वर्क इन द डिजाइनिंग टीम. If that is the case, you may be asked to study the CAD CAM designs, or you may be asked to some conduct, review certain blueprints of the project. Either follow it or discuss among the team members, and some small tasks will be assigned. So this is a small thread of a huge project which is undertaken in that particular organization. और मैंने टेक महिंद्रा का एग्जांपल भी दिया था जिसमें हमने बात की थी आईडीयूज एसबीयूज की भी. So when you consider a huge organization like Tech Mahindra, there are multiple single business unit, okay, which are the SBUs. business units होते हैं और उन बिजनेस यूनिट्स में ओके जो प्रोग्राम मैनेजर्स हेड करते हैं तो उनके नीचे बहुत सारे आईडीयूज होते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट यूनिट या इंडिविजुअल डिलीवरी यूनिट्स बोलते हैं उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये आईडीयूज बहुत सारे होते हैं अंडर वन एसबीयू. ओके, तो ये आईडीयूज के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, सी द हायरार्की. और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट में आपको कोई एक काम मिलता है, असाइनमेंट मिलता है. समझ में आया ये हायरार्की? तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए allocation of the resources, time management, ये सब बातें करनी जरूरी है. Senior manager must make sure that project continue to support current business need. So when we talk about such hierarchy, obviously the project manager needs to interact and have coordination among the different IDUs, among the different SBUs as well, within them as well, and the team members as well. So it cannot run in isolation. Just to recall the slide which we had seen in the earlier session, there are a tactical and strategic goals. So project management compared to project portfolio management हमने देखा था, तो they are interrelated. Strategic goal हासिल करने के लिए हमको tactical goals को define करना पड़ता है, execute करना पड़ता है. So this is the interaction we have seen in the earlier session. जैसे strategic goal पूरे organization के लिए consider की जाती है at the very high level, whereas project management is at the middle and the organizational level, wherein such kind of questions can be asked to understand the goals, that is the objectives defined and needs to be chopped it into tasks. Okay, तो कैसे करना है वो आगे हम देखने वाले हैं, maybe in the next sessions further, wherein the work breakdown structure भी हम discuss करने वाले हैं. because कोई गोल हासिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव को डिफाइन जरूरी करना पड़ता है. वो ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइबल होने चाहिए, और वो क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए, एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करने के लिए, we need to work out certain work breakdown structures which are nothing but tasks, group of tasks. ये थोड़ा थोड़ा करके हम आगे जाके हमको इसको पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका जिक्र किया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसके बाद yes. So this is the context of your learning when we talk about the project management umbrella activities. जो अभी मैंने बताया कि environment होता है internal and external. तो क्या है ये? मैंने ये भी बताया कि ये there is a interaction and interdependence within the environment and outside the environment stakeholders. तो किस तरह से है इसका आपको एक साधारण overview में दे रही हूँ. Okay, no need of going into details right now. Okay, so just see towards in the middle, सेंटर में जो येलो कलर का रेक्टेंगल है उसमें मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखा है. ओके, नाउ दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अंडरटेकन बाय सर्टेन टीम. ओके, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द
operational people, that is managerial tasks are involved, technical tasks are involved, and accordingly the people and the stakeholders are related which are going to carry out the task which are defined. Okay, there is a context. Context क्या है? It is the environment in which these people are going to work out. जैसे for example कोई civil engineering का project है तो वो context बनता है उसका. कोई IT का project है तो IT systems ये सारे concept उसमें consider होने जरूरी है. कोई pharmaceutical का project है तो healthcare and pharma would become the context. So ये define होना बहुत जरूरी है project management के लिए. और ये पूरा जो है दो अलग एनवायरमेंट से उनका रिलेशनशिप और इंटरेक्शन होता रहता है. जैसे on the left hand side you see something called as processes, planning, scheduling and control. Please remember these processes. These are nothing but your project management processes which we are going to discuss today. These are the processes which actually are part of the life cycle of a project. सो हर एक प्रोसेस का अपना अपना एक इम्प्लीमेंटेशन टास्क, ग्रुप ऑफ टास्क होता है जिसके लिए असाइंड स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसके लिए एफर्ट्स यूज जो हम करते हैं, डिफाइन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो एफर्ट, टाइम, रिसोर्सेस पूरा हमको यहाँ पे डिफाइन करके इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है. Okay, so all the processes, planning, scheduling, controlling are the part of life cycle. We are going to see it further in the next slide. Right hand side को आपको कुछ अलग बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका भी इम्पैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. Please remember, may it be a IT or a non-IT project, any kind of a project is implemented with such kind of different units or sections playing their own role in administering and controlling and monitoring and smooth flowing कैसे हो ये जानने के लिए और ये करवाने के लिए ये सारे sections responsible होते हैं at different point of the project life cycle. हर एक यूनिट का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. फॉर एग्जाम्पल से व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट फ्रॉम द डे वन टिल द क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट यू नीड टू हैव क्वालिटी पर्सपेक्टिव. जैसे व्हेन आई से दैट पहले भी प्रोजेक्ट कैरी आउट किए जाते थे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है उसमें? अर्लियर इट वाज अ haphazard approach. Considering example of an IT project, when software development life cycle के approach इस्तेमाल करने गए, implement होते दिखाई दिए, there came systemized effort. haphazard approach में बहुत resources waste होते हैं. जैसे हम कोई भी काम करें, अगर हमारा contingency नहीं है, हमारा systematic plan नहीं है, तो कोई भी कैसे भी चल रहा है, then it is waste of resources, time is affected, directly affects the revenue, which is costlier project, which results in failure. Customer satisfaction is utmost important. At the same time, optimal utilization of resources, of efforts and time both. अगर ये नहीं है तो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है. तो इसके लिए हमारे ऑडिट्स होते हैं. ऑडिट्स पहले डिफाइन किए जाते हैं, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोटोकॉल्स एंड एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करते हैं, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है कि नहीं, इसके लिए उनके चेक्स एंड कंट्रोल्स होते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. वी आर गोइंग टू सी इट लेटर समटाइम्स. Okay, so this is one example of this quality management. It is consistently consistent efforts by the internal stakeholders. Okay, there are certain norms, there are certain protocols and regulations for this which the team has to abide. रिस्क मैनेजमेंट भी उसी तरह से है कि देयर शुड बी सम कंटिंजेंसी, देयर कुड बी स्लिपेजेस इन द प्रोजेक्ट. कोई अभी नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई सिस्टम डिजास्टर आता है, सिस्टम क्रैश हो सकती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे एग्जांपल दे रही हूँ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, टेस्टिंग चल रहा रहता है, लेकिन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर का वेंडर सपोर्ट अगर बंद हो गया, जैसे इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच आई वाज इन्वॉल्व्ड, there is something called as a QTP software and test director software, Windrunner software. These software are
testing software which was taken from the vendor in order to test the software projects run undertaken in Tech Mahindra. At one of the project, I experienced that all of a sudden Windrunner ने अपना support हटा लिया. It was overtaken by some other company. पहले it was with a company, it was overtaken as a strategic joint venture aspect या company acquisition aspect by HP. ओके तो ये जब एक्विजिशन चल रहा है, पहले वाले वेंडर ने सपोर्ट हटा लिया और ये ट्रांजिशन फेज में हमारा प्रोजेक्ट सफर हो रहा था बिकॉज हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो वेंडर से. तो ये कंटिंजेंसी हमको ध्यान में लेनी चाहिए कि अगर टेस्टिंग वहां पे रुक रहा है, व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव वी नीड टू डू. we actually tuned into the documentation quality perspective. So कुछ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए वो सपोर्ट नहीं था, उसमें हमने हमारा डॉक्यूमेंटेशन का क्वालिटी चेक करके लिया, प्रोजेक्ट का पूरा कंटिंजेंसी प्लान रिवाइव किया, वी यूटिलाइज्ड इट इन अ वेरी productive way, and we also checked the customers with the earlier slice of functionality so that ये जो टाइम चल रहा है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइज करें. We also interacted with the project developers so that it was an agile approach. It became very easy for us and very convenient for us because all the members are together working and they are in line, aligned to each other. तो रिस्क मैनेजमेंट में ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट आई मीन मैंने ये जस्ट स्मॉल एग्जांपल दिया है, देयर कुड बी मेनी अदर एग्जांपल्स इन रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क क्या है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसको प्रोजेक्ट करना जरूरी है, उसको असेस करना जरूरी है, उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस वर्कआउट करना जरूरी है. देयर इज आल्सो फीजिबिलिटी एनालिसिस. सिमिलरली एचआर मैनेजमेंट, सो मेनी रिसोर्सेस आर, टर्नओवर तो बहुत होता है लेकिन प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज प्रोजेक्ट स्लिपेज होता है तो वो भी एक रिस्क है. तो कंटिंजेंसी क्या है? allocation of resources from other projects in within that organization or hiring some new person. लेकिन अगर ऐसा करें तो प्रोजेक्ट और डिले हो जाता है क्योंकि वो नया आदमी होता है, उसको ट्रेन करने के लिए वक्त लगता है, पैसा लगता है, टाइम लगता है. तो क्या करें? HR management plays a very crucial role and that is a different total area we need to understand. Similarly, configuration management, there are so many artifacts which are developed during a project, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्जन कंट्रोलिंग होना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे टास्क्स आर इन प्रोग्रेस. ओके, तो उसका स्केड्यूलिंग होता है, तब उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होता है एक्चुअली there is some kind of a WBS structure which is followed in any good project. लेकिन ऐसे हो सकता है कि कुछ अर्लियर स्पेसिफिकेशंस वर मच बेटर. ऐसे अगर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर या लीडर को समझ में आता है या कस्टमर से रिक्वेस्ट आती है तो दे नीड टू रिवर्ट टू द अर्लियर वर्जन, एंड अगर उसका वर्जन कंट्रोलिंग नहीं अच्छी तरह से रखा गया होगा तो it may become a very major problem. So configuration management plays a very vital role in any project. Procurement management, जैसे procurement मतलब whatever resources are required, time, effort, money, material, okay, all those resources needs to be procured in advance as per the timeline. तो उसका एक अलग से मैनेजमेंट होता है. ओके, तो ये जब जो आपके सामने कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग के 3 बॉक्सेस मैंने अभी एक्सप्लेन किए. First of all, the middle thing with respect to the actual core project activities, including the managerial, technical, and what is the environment context in which that project is undertaken. On the right hand side, these are all the quality management, risk management, HR management, configuration management, procurement management. These are all the different units which are acting from the administrating perspective, from a monitoring perspective. Okay, and to the left hand side we have just touch based certain processes of a life cycle of a project, including process definition, planning, scheduling, and controlling. ये सारा पूरा जो है is carried out based on 2 important things, that is the base and foundation of this particular aspect of this particular project management environment, and that is utilizing project management tools and communication and reporting, which is the base in this particular diagram. Please remember, whenever you are using advanced project management techniques, you need to get well versed with its aspects and features so that you utilize the features properly. Otherwise, कोई भी सॉफ्टवेयर टूल हो, चाहे आपका मोबाइल का कोई ऐप का एग्जांपल आप ले सकते हो, if you are familiar with it,
Okay, you will utilize it properly. Otherwise, एक तो वो over utilize हो सकता है या under utilize हो सकता है. Okay, and both are dangerous. So PM tools, a person should be a person, that is the project management and the team manager and the team members should be aware of the project management tools which are selected and which are made available for them to manage these whole project management umbrella activities. ये क्या tools है हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं, because these tools are mapped with the certain activities defined in the life cycle. And most important bonding is the communication and reporting. As per the hierarchy which is defined in the team structures, the communication has to be very smooth. जहां पे communication gap आता है वहां पे problem शुरू हो जाते हैं. So we need to be aware about the communication and the reporting tools and execute and implement them to run your projects. We have already seen this project stakeholders. Can you go to the next slide? Any question, by the way, on this slide before we move ahead? Up till now, any question? Up till now, any question? No, ma'am. Everyone, are you understanding? Yes, I would, ma'am. I would request Prasad sir to share this slide pack with everyone, because tomorrow's session also probably we may require to continue with this topic itself. So this would also balance the syllabus completion process. क्योंकि strategic management का पूरा control में है syllabus. खाली हमारा एक या दो इम्पोर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का बाकी है, लेकिन पीएम का थोड़ा पीछे था, इसलिए दिस ऑल्सो सी लुक दिस आई टू एज अ कंटिंजेंसी. मेरा लैपटॉप नहीं है लेकिन ये वाला स्लाइड पैक पहले से ही मौजूद था मेरे पास, तो मैंने ये यूटिलाइज किया सो दैट आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन ये वीक में फर्स्ट चैप्टर हमको फिनिश करना है, खत्म करना है क्वालिटेटिवली. So I hope everyone is following this. So if you read, please share this slide with the students so that they can come prepared, going through the further slides also. And don't worry, as far as the assignment which I have given for the strategic management in the weekend, I'll extend the date, because as I could not share the assignment, I can extend the date as well, because I don't have my machine and it crashed on Saturday, so I don't have it with me. I will be getting it maybe tomorrow end of the day. So we'll continue with that from Wednesday as such. So considering that you don't have any doubt, let's move ahead. Let's move ahead. So project stakeholders, we are aware about project stakeholders. These are the people which are affected by project activities: sponsorer, manager, team member, support staff, customer, user, supplier, and yes, opponents of the project, that is the competitors, are also stakeholders. So you can see that internal and external environment की जो मैंने बात की थी शुरू में, तो ये सारे उनके टीम मतलब you can say members है उसके. Next slide. Is it visible to you all? I don't know. I mean the font of the slide. Next slide, please. मोबाइल से मुझे ये स्लाइड ऑपरेट नहीं करना आ रहा है. ओके, नहीं नहीं, उससे पहले वाला. So when we talk about the PM tools and techniques, is this visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If it isn't visible now, we can zoom in, ma'am. I don't have that. Prasad sir, can you? Okay, Just at zoom in individual with level you your can zoom. fingers, ma'am. Yes, ma'am. With fingers you can zoom in, so it's easily readable, ma'am. Okay, okay.
Fine. Project management tools and techniques assist project manager and the team in various aspects of project management. You can see here some common project management tools and techniques by knowledge areas. And by knowledge areas, I mean that these are the various aspects which are actually the monitoring, administrating, वो जो हमने अभी देखा था उनके सारे कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन मैनेजमेंट हो, management of scope, time management, cost management, quality management, HR management, communication management, risk management, procure management. These are all the knowledge areas which we have just seen as on the right hand side of earlier framework. So these whatever knowledge areas are there are nothing but the various category of areas which go hand in hand as administrating activities whenever a project is in progress. So ये एडमिनिस्ट्रेटिंग एक्टिविटीज जो होती है उनको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसके लिए आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है, आपको उसका ओरिएंटेशन होना जरूरी है, और हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक नॉलेज एरिया के लिए उसका एक पर्पस होता है, वो टूल किस तरह से यूज किया जा रहा है, क्यों यूज किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि जस्ट आई टेक वन एग्जाम्पल, कौन सा ले, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं. इन द सेम स्लाइड यू कैन सी दैट communication management plans, kick-off meetings, conflict management, communication media selection, status and progress reports, virtual communication, templates, project websites, ये सारा उसमें आ जाता है उसके परव्यू में. जैसे हमने बताया कि जो भी स्टेक होल्डर्स, especially take example of the internal team. Okay, सपोज आप एक टीम मेंबर हो, आपने कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है, तो जब हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, हमारा ज्वाइनिंग होता है, प्रोजेक्ट असाइन होता है, और जब हम काम शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं, वो कम्युनिकेशन इज देयर बिटवीन योर टीम मेंबर एंड यू, and that team member basically is going to interact with you. It's not an informal communication, this is very much formal. It has to be with the help of email and documentation, because ये पूरा documentation किया जाता है of the key resources, key people. So not every key person, not every team member is allowed to access the document. There is suppose the project team lead assigns the authority to someone. Not all the team members can access that particular document, that key template. For example, specification document. उसमें क्या होना चाहिए वो key person decide करते हैं. That is the communication protocol. Okay, उसको editing rights, privileges specific लोगों को रहते हैं, not all. So team members have the reading accessibility, not any other writing privileges. So that's how, I mean, this one example I can give. Okay, so मेरा यहाँ पे network poor आ रहा है, connecting problem. I would recommend you all to read this particular slide properly, and maybe tomorrow we can continue, because I would like you all to go through this particular slide and come up with questions if you have, and we can continue tomorrow with from the same slide further. Any other doubt you have before we end the session? We'll end it a little early because I'm finding here I'm unable to read the slide also from this mobile. If you have any doubt, I can just invest these 2 minutes in the doubt resolution. Yes, friends? Any doubt, any question up till now? How much time? How much time we have? It's 8:05, right? 6 minutes. Yeah, maybe another couple of maybe a couple of minutes more we can invest in this. Maybe time management, we can take one more example. There are certain tools like Gantt charts, yeah, project network diagrams, CP, critical path analysis, tracking tools, scheduling tools, performance measurement tools.
So these are the tools which are used for time management. कि time management करने के लिए किस तरह से tool utilization होते हैं, techniques use किए जाते हैं. For example, Gantt charts होते हैं. Okay, so यहाँ पे whatever tasks are there, activities are there. Across the project management activities, these tasks are identified. क्योंकि when a project is progressive, there could be multiple tasks which may go hand in hand. आपको उस तरह का शेड्यूलिंग करना जरूरी है. तो शेड्यूलिंग करते वक्त आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. तो कैसे करेंगे? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी 2-3 या व्हाटएवर एक्टिविटीज कैन गो टुगेदर. जैसे कोई बिरयानी बन रही है, तो आपकी किचन में मे बी योर मदर विल डू सर्टेन थिंग्स पैरेलली. Okay, she will put the rice to soak and at the same time she will do the masala for it. These two activities can go hand in hand. Okay, because the timeline matches. So ये identify करके सब टीम को एक thought process पे लेने के लिए Gantt chart use किए जाते हैं. We'll take example of a Gantt chart further sometimes, but these Gantt charts help us identify the parallel activities and manage the time efficiently. This would be the one example here which I can quote. Okay, so friends, we'll end here and we'll see from the same slide for tomorrow. I'll end the session over here. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks. Good day.